inshallah. And when we are going to have this test was of 58 marks entirely, right? Duration was 1 hour and 15 minutes, right? And I hope that everyone got that test in time. Patla. Okay, score was 58, and the topics were kinematics and measurements. And as you people have gone through the test, there were 20 MCQs in that one, and 38 marks theory was included in the test. ठीक है जी. अब हम लोग आते हैं MCQs पे one by one. So I have marked all the MCQs after calculations. So let's talk about that. The first one was that an object is having some motion and its graph was represented in this one, and it was asked that between which two parts the object was having uh, different motion, description of motion, PQ, QR, and RS were the parts जिसमें आपने discussion करनी थी. So it is the distance time graph. That is why PQ is a constant, has a constant gradient, and in PQ if gradient is constant, distance time का gradient constant होता है तो speed भी क्या होती है, constant होती है. And here the body is at rest, and again it has a constant speed. So this was constant, zero and constant. So option A was that. That's why that option is correct for everyone. This was the next question, and in that question, uh, yes, it was said that a stone is freely falls freely from the top of the cliff. The air resistance may be ignored. That was the main, keyword here. ठीक है Mariam? There was Yes, a sir. keyword here. Okay, so which graph shows the relation between the stones varies with time t and falls? Okay, acceleration and time ka graph hai, and acceleration will remain constant throughout. So that's why option D was correct. I believe that this will not be, I mean, this would be clear to you that why I have not selected A, because it is increasing acceleration. Option B is decreasing acceleration. After C, option C is increasing acceleration non-uniformly, and option D was uniform acceleration. So आपने किसको hunt करना था? Uniform acceleration को, which was actually 10 meters per second square or 9.8 meter per second square. So is it correct to all? Is it clear to all? Sir, could you explain it? How was it in uniform acceleration again? Actually, when air resistance is ignored, all the bodies which free fall, they have the acceleration of 9.81 meter per second square throughout. ठीक है? Oh, yeah, yeah, yeah. Yes, that was the issue in this question. Then this was the question which was, yes, Ariba, focus on this question. In that question, um, it was asked, it is speed time graph, and what is acceleration of the car? So acceleration means you have to take the gradient. So gradient is rise over run. So rise is 30 minus 20, and run is 20 minus 0. Right? तो क्या आंसर आ जाएगा? 10 by 20, which was 0.5 meters per second. Okay, is it clear to all? Yes, sir. Okay. Next, I'm not asking, I mean, I will not ask that who made this question incorrect or whose question was correct and incorrect. लेकिन ये था कि आप लोगों को इन questions के ऊपर focus करना है, and after the test, I will need a quick feedback that you people got the test, and if the same test is given to you again, what would be your score? Just monitor. Okay, Caracas spaceship is approaches to the Earth from the space. Near the Earth, the force of the spaceship causes to have weight. This causes it to change its speed and direction. So, क्या कर रहा है कि which type of force causes the spaceship's weight, and which property? Remember one thing: which property of the spaceship resists its change in speed and direction? So gravity was the force, and inertia was the property due to which it opposes the motion, which have some resistance to change in motion and direction. So actually, inertia was what?
measurement of mass. So that's why its option was option A. ठीक है? Is it clear to all? जिसका नहीं clear हो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? Okay. Okay, sir. Okay, so this was one of the tricky questions, because in that tricky question, what is being asked to you, that if I mean, two cylinders are given to you, smaller one and uh, larger one, okay? Then the meniscuses are given to you. Both the cylinders have the meniscus here, okay? And like this. So it was said that which cylinder should the student use, and which water level should she use to ensure the accuracy of the results, or accurate results. So remember one thing, that accuracy increases uh, when the values changes, or the change in value is larger. So this is a small cylinder, so when you will fill it up for very small amount of water, there will be a significant raise in the water which would be noticeable. That's why smaller cylinder will be suitable for accuracy. And secondly, the which meniscus would be used. So if she is going to use the mm, upper meniscus, or top of the meniscus, then maybe she would not be able to notice the level of the water, because their level of the water is very small, or negligible, or not noticeable. So she will use this meniscus, ये जो lower meniscus है, ठीक है? So this was that question, one of the tricky questions. That's why I told you that you have to consider this question. The next one was Sir, again the graph. Yes. if it's like a colored liquid, then you will measure the top of the meniscus, right? Uh, Actually not, because the most of the water is, I mean, uh, yes, most of the water is accumulated till lower meniscus. So uh, that will give you more accurate results. And what if it's a colored, like for example, if it's a juice or something, or like still you If would it use is the bottom of the meniscus, or would you use the top bottom one? of the meniscus ही use किया जाता है, mostly we use bottom of the meniscus. What are the conditions when you use top of the meniscus? In top of the meniscus is actually used in those liquids which are having the curved concave meniscus. ये आपको बेसिकली नहीं आपके सिलेबस में, इसलिए मैंने ये एड्रेस नहीं किया. So let's like just like honey, or those liquids which are having strong cohesive forces with the sides, they are actually attached they have more strong forces with the sides walls. तो इसकी वजह से क्या होता है, they have a concave meniscus. So in concave meniscus we measure, or we notice the things from the top of the meniscus, and that was a convex meniscus. For convex meniscus में हम लोग कहाँ से notice करते हैं, bottom of the meniscus पे. Okay, ठीक है? got it. Yes. Okay, so which distance time graph, was it not numbered? 5 6 7, yeah, it is a numbered question. करके which distance time graph represents the motion of the object moving at constant speed. तो constant speed के लिए आपके पास obviously ओ constant speed है. ये मैंने मरियम का एक आंसर, एक नंबर ऐसे ही ज्यादा दे दिया है मरियम. दैट वाज ऑप्शन डी. ठीक है? आई थिंक मैंने किसी और का तो नहीं इनकरेक्ट मार्क किया हुआ. चेक करो जरा सारे. बिकॉज No, sir. कांस्टेंट स्पीड में this means rest. ठीक है? Okay, इज इट got क्लियर it, sir. मरियम? Yes, got हाँ, it. ये तुम्हारा लकी नंबर था, वहां ऊपर से एक माइनस कर देते हैं अभी अभी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7. You are going to find the distance traveled, sorry, distance traveled in the car in 24 seconds. So distance travel में आप क्या करोगी, 1/2 base times height. So 1/2 base time height का मतलब क्या है, base is 24 and height is 14. So 1/2 base times height will give you 1/2 base times height, right? 1/2
I mean base into height divided by 2. So C option was correct. Okay. Then which instrument is used to compare the masses of the object? So it was very simple. A balance, not a barometer, not a manometer. They are pressure measuring instruments, and measuring instrument is volume measuring instrument. This was one of the question. A liquid has a volume of 100 cubic centimeter and the mass of 85 grams. The density of the water is 1 gram per cubic centimeter. How does the density of the liquid compare with density of the water? तो आपके पास density of the water given है, you have to calculate density of the liquid and then you have to compare. So density is mass by volume. So 85 is mass, 100 cubic centimeter is the volume. So ये आपके पास कितना बन गया? 0.85. So 0.85 is less than 1. So you will say that that liquid is having lower density than that of water. That's why its option is correct. Okay, Yes. clear hai? Okay, which quantity can be measured directly by using micrometer screw gauge? So micrometer screw gauge, Mariam, it is not used to measure the mass. Actually, it is used to measure some diameter, thickness or length. ठीक है, तो एरिया भी नहीं मेजर करता, mass भी नहीं मेजर करता, वॉल्यूम भी नहीं मेजर करता. That's why option C was correct. Okay. Then the velocity of the object increases from 30 to 50 meter per second in 5 seconds. So what is the acceleration, average acceleration? So acceleration आपके पास क्या होता है? V minus U divided by T. So V is 50 minus 30, 20, 20 by 5, 4 meter per second. So it was probably a true answer for from all of them. Okay. Oh, what is this, man? L&M and okay. मरियम तुम्हारा दूसरा नंबर ऊपर जा रही है. सारे देखो चेक करो. ये इज डिड आई मार्क इट फॉर डी? डी पे मार्क करना किया था मैंने. इज डी इज करेक्ट? खदीजा, मरियम एंड जैनब हैं? जैसे डी है. हाँ डी है. ये आज मरियम का वाकई कोई लकी नंबर चल रहा था. मरियम पुत्र काउंट करते हैं. ये वाला मसला होता है, इसलिए मैंने कहा था देखो इजाजत है, अपना पेपर देख, मैं खोल के चेक कर रहा हूँ. सो अलाउ करती हो? तुमने कहा हाँ. मैंने कहा था ना कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी बाद में. हैं? I don't mind it. Thank you. अच्छा. Okay, so this is what this is your uh, this is your 20 हाँ, कह रहा है कि where the speed of the ball will be greatest and at which time will be the shortest time. So definitely the greatest speed would be between the lowest two levels, and when the speed will be lowest, speed will be largest, the time taken will be shortest. So that is why both were correct for ऑप्शन डी. एल एंड एम पे ही ये दोनों काम सही हो सकते हैं. स्पीड भी हाईएस्ट होगी और आपके पास वो टाइम भी शॉर्टेस्ट होगा. सो इट वाज करेक्ट फॉर But isn't डी. it like even though I did L&M, but like shouldn't the speed be highest in J&K because that is the like the speed is more initially, right? Or does it increase afterwards? ना ना ना, तो जब बॉल फेंकते हो ना इधर से, तो इट्स स्पीड इज ऑलवेज जीरो. ठीक है. Okay. As it moves down, its speed after 1 second, its speed would become 10 meter per second. After 20 seconds, its speed would be after 2 seconds, its speed will be 20 meter per second, and so on for 30 meter per second, and so on. So जितना जितना body नीचे आता जाता है, its speed would become larger and larger and larger. ठीक है? Okay. That's why. Got it? Everyone's got that point? Okay. Then question number 13. If you people have any question, you people can ask me. Question number 13. A body moves from X to Y where the gravitation field strength is different. What will happen to the mass and its weight due to mass remains unchanged and weight changes definitely. That's why it is correct. Then this was the question number 14. It was very honest question for density. आप लोगों को अगर ये question आ गया तो आप समझ लो कि you have practiced 4 questions of density for one. So the volume was, I mean, area and height was given and mass was given to you,
and density was to be calculated, and question was what has the greatest density. तो density calculate की गई है हर एक के लिए. For this one it will be 14 divided by 2 times 10 20. For this one it was 48 divided by 2 times 20 40. So ये सारी calculations की गई हुई हैं. So it was 2.7 and it was 1.7. So the largest density was for option C. Clear है? Is it clear to all? Yes, sir. Okay. Question number 15 was another horrible question for density. In that one, the concept was the liquid's volume. Sorry, the concept was how to measure the mass volume of the empty or only liquid with the container. So empty box का mass इतना था. When you filled with water or liquid, its mass is this much, and you have to calculate how much density does it have, that liquid have. So sorry, how much volume does it have. तो density given था, ठीक है. You have calculated mass of the liquid by subtracting these two numbers and then applying the formula of density is equal to mass by volume, and density is equals to mass by volume करके volume was mass by density. So your option was how much? 200 cubic centimeter. Is it? Yes, 200 cubic centimeter. Agreed? सारे लोग agreed हो? Yes, sir. Good. Then this was the question in which you have to just count the numbers, nothing else. Our total stack of identical coins was there, and its thickness was 2.4 centimeter. But how many coins were there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 2.4 divided by 12 करेंगे. So what answer will you get? Oh, I think I ignored the unit. Sorry. I ignored the unit maybe. Just a second. तो ये आंसर कितना हो जाएगा? It was 0.2 centimeter, right? Yes. Millimeters. 0.2 centimeter is actually equals to 2 2 millimeters. millimeters. Yes. I oh my god. ये अरीबा आप अपना देखो जरा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सबसे पहले किसका पेपर चेक किया था? यस, अरीबा का पेपर चेक किया था. मेरा ख्याल है मैंने वहां पे कोई मिस्टेक किया है. जस्ट अ सेकंड. I'm sorry, sir. You had told me to do something. Yes, I checked your paper and Right. you made this mistake. I think that is why. So you have to cut 1 mark from here. तुमने सबका नंबर कटवाया है, तो तुम्हारे वैसे 2 नंबर काटने चाहिए. कौन आंसर बी है? Yes, its option is option B. सर मेरा आपने Because गलत mean किया है. हाँ, मैं उस पे आता हूँ, दोबारा आता हूँ. Because I just marked on correct on option 0.2 आ रहा था. I ignored the units, but यहाँ पे units भी थी. So 0.2 centimeter was actually 0.2 millimeters, right? 0.2 centimeter was the thickness of the one coin, and it is equals to 2 millimeter, right? So 2.0 millimeter B. अब मुझे ये बताइए whose answer is correct. मैं अभी यहाँ पे ही चेक कर लेता हूँ. खदीजा का क्या आंसर था? हाँ, यस. खदीजा का एक, खदीजा आपका 1 नंबर बढ़ गया. ठीक है, यू कैन ऐड 1 मोर हेयर. और जैनब आपका नहीं sir, मेरा तुम्हारा नहीं पढ़ सका यहाँ पे. ओके, नो इश्यू. मरियम का 1 नंबर यहाँ से और खाया गया. आए हाय, ये तो मसला होता है. ठीक है. Okay, 4 balls of different masses are dropped from the height shown. ठीक है. So which ball will have the greatest average speed? And which statement is correct? तो उसने बोला air is negligible. So the ball which is coming from the largest height, its average speed would be greater.
सो ये आप लोगों को पहले भी समझाया था. आई थिंक दैट वाज अ क्वेश्चन, इट वाज discussed in the worksheet also. So that is fine. Now this one, yes, this was the tricky MCQ. खदीजा नहीं, मरियम, अरीबा. अरीबा, आपने बी को चेक इन सर्कल करके फिर ए पे क्यों आई थी आप? व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट? अली पानी दे यार. I'm sorry, sir. हाँ, आज तो Confused मुझे by सुन नहीं the रही है शायद. sentence. Yes, I was saying that you just opt option B, but now, I mean, after opting option B, why did you switch to option A? Can you explain me the reason, please? अब I had देखो ना, never swapped to you option A. just, nah, your option B was there, and then you cut it, and then you have selected option A, isn't it? In your paper. अभी Oh, चेक करा देता हूँ. yeah. Now I अभी can चेक see it. I करा can see देता it. हूँ पुत्र. मैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, इसलिए ये देखो. Okay, this one. I thought you were talking about the one below. Okay. Hmm. At which labeled point it's the object accelerating at changing rate. So actually what he wants from you कि आप mean increasing acceleration या non uniform acceleration की बात करेंगे. So whenever a velocity time graph is a straight line, it would be a uniform acceleration, right? Yeah, And when there will be a curve, it would be a non uniform acceleration. right. I get it. Yes, that's why option B was correct. Okay, is it? तो आपने ऑप्शन सी ऑप्ट किया हुआ था. खदीजा, आपका भी मेरा ख्याल गलत है. एंड मरियम का देख लेते हैं. जैनब, आपने क्या किया हुआ था इस पे? सर मेरा सही है इसमें. गुड. टू रॉन्ग, टू राइट, आई मीन टू करेक्ट. तो मरियम का भी सही है, जैनब का भी सही है, खदीजा और अरीबा, आप दोनों की वजह से 50-50 पे टाई हो गया. तो इसका मतलब मेरा, मैं भी बी कह रहा हूँ. दैट्स व्हाई ऑप्शन इज बी. ओके, वेरी गुड. उसके बाद कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द masses and weights of an object on the earth is correct. So अच्छा, यहाँ पे खदीजा आपने एक छोटा सा मसला किया हुआ था. In last 2-3 questions your concentration was lost. Why? सर सही तो आया था. um, Except question 19. yes, 19 सही कहाँ से आया था? नहीं, एक 19 और मिनट. 18 दोनों गलत है. नहीं 18. हाँ, वेट, 18 का आंसर बी 18 था. सही है. हाँ, 18 का आंसर बी है. आपने सी किया हुआ है. आपका आंसर ये है. ये मुझे जो मैं देख सका वो ये है. मैंने जूम शूम करके देखा, और यहाँ पर भी मुझे लगा कि पहले आपने बी किया था. ये देखो, आपने फिर अरेज करके जो पक्का वाला आंसर आपने दिया है मुझे, वो डी था. सो दैट इज व्हाई आई मार्क डी. ठीक है. यस सर. सो कैन आई आस्क द रीजन? तुम्हारे पीछे पूरे 15 सही आ रहे हैं, यहाँ पे क्या मसला हुआ? बैक टू बैक दो गलत किए तुमने. Mean, I want to know whether do you have some, do you need some reinforcement in this mass? I mean, in this topic, graphs. Because like सर हैवी ऑब्जेक्ट्स उनकी अगर डेंस देखें, अगर लाइट ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी अगर ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा हैवी हो सकते हैं. लाइक उनका मास ज़्यादा हो सकता है. नहीं, लाइट और हैवी, लार्ज और स्मॉल में फर्क है. देखो, जो लाइट होता है ना, लाइट का मतलब उसमें मैस कम है. हैवियर का मतलब उसकी मैस ज्यादा है. लेकिन लार्ज का मतलब ये होता है कि वो साइज में बड़ा है. अब देखो, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये लार्ज है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि ये हैवियर है. ये वाला ऑब्जेक्ट स्मॉलर है साइज में, लेकिन हैवी हो सकता है. मेरी बात समझ आ रही है? यस सर. सो whenever you are going to have this concept, heavier and larger में फर्क याद रखना है. ठीक है. यस सर. हम जिसको कहते हैं ना बड़ा ऑब्जेक्ट इन इन फिजिक्स, size, bada by size is different and bada by mass is different. Is it clear?
बट बात तो सही है ना कि लाइक अगर डेंसिटी ज्यादा हो स्मॉल लाइक लेस वेट वाले में लेस वेट वाले में कैसे हो सकता है? लेस साइज वाले में हो सकती है फिर। यस सर लेस साइज वाले में तो फिर लाइक उसका मास ज्यादा हो सकता है। ओके, तो आपने कहा कि मैथ इज, वेट वेट वेट, आप कहाँ पे पहुंची? विच स्टेटमेंट अबाउट द मैथ? Sir, if you're saying something, I can't hear you. यस सर। यस, नाउ डू यू हियर मी? एक्चुअली मेरा माइक बीच में उसका कभी अगर बैटरी डेड हो जाए सो उसको फिर मुझे रिचार्ज करना पड़ता है। सो नाउ आई हैव स्विच्ड इट आउट, दूसरे वाला माइक लगा रहे। अब आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. यस सर। ओके, गुड हो गया। मैं ये कह रहा था कि आपके पास जो सारी सिचुएशन है जिसके ऊपर आपने काम किया, ऑप्शन बी पे हम लोग बात कर रहे थे, ऐसे ही है ना खदीजा? यस सर। तो आप मुझे ये बताएं, आप कुछ कह रही थी कि ऑब्जेक्ट जो हैवियर होगा, ऑप्शन बी पे अगर मैं बात करूं, हैवी ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज हैव मोर सर फॉर mass। लाइक लाइट देखें ना, अगर कोई लाइक लाइट देखें बात क्या है ओके, वैसे। समझाओ समझाओ मुझे, समझाओ ना, इशू नहीं है। देखें देखें एक बड़ी बॉल और एक छोटी बॉल दोनों मेटल की हैं। अगर छोटी वाली बॉल के अंदर लाइक डेंसिटी ज़्यादा हो बड़े वाली से तो फिर लाइक उसका मास ज़्यादा होगा। बिल्कुल मानता हूं मैं। दोनों, ये लेट से ये आपके पास प्लास्टिक है, ठीक है, और ये आपका मेटल है, ऐसे ही कहना चाह रही हो, यस सर। है ना? अगर डेफिनेटली मेटल का डेंसिटी ज्यादा है प्लास्टिक से, सो अगर मैं इसका वेट मेजर करूं तो हो सकता है इट वुड बी 2 न्यूटन, बट अगर इसका वेट मेजर करूं तो हो सकता है इट वुड बी 20 न्यूटन। इज इट? यस सर। सो जो मैस है ना, ये क्यों हैवी हुआ? बिकॉज इट हैज मोर मैस। देखो, मैस इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर आपका वॉल्यूम थोड़ा हो रहा है तो डेंसिटी के ज्यादा होने की वजह से मैस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो जितना मैस ज्यादा होगा, बॉडी उतना उसका वेट ज्यादा होता जाएगा। वेट ज्यादा होगा तो बॉडी विल बिकम मोर हैवियर। हैवीनेस वेट के ऊपर डिपेंड करती है ना, साइज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है? और ये जो आपने ऑप्ट किया हुआ है, ये बिल्कुल शरण गलत क्वेश्चन, गलत आंसर है कि मैथ इज अ फोर्स एंड वेट इज अ नॉट। ये उल्टा है, ये गुनाह कबीरा है, आन के बाद ऐसा नहीं करना। ठीक है? यस सर। बात समझ आ रही है? मैथ्स कभी फोर्स नहीं हो सकती। ठीक है? ओके, इस पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। लास्ट वाला क्वेश्चन था, ऑब्जेक्ट इन द स्पेस probe above the earth has a weight of 3.5 newton. The gravitation field strength at the height is 7.0 newton per kg. The gravitation field on strength on the earth surface is 10 newton per kg. What are the mass and the weight of the object on the earth surface? आपके पास ऑब्जेक्ट का mass and weight surface of the earth पे निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है? I have to find mass of that object. So mass is actually weight divided by gravitational field strength. Weight is 3.5 divided by 7. Whatever the planet is, I don't care about that. But whatever the planet is, its weight, its mass is 0.5 kg. So the mass will remain same on the Earth also, na? Is it? Yes, sir. That is why these two options were gone. They are incorrect. And if mass is 0.5 kg, you can say that weight is equals to again mass times this. So 5 into 10, it is basically, sorry, 0.5 into 10, it is 5. So that's why it is option B. ठीक है? Is this clear to all? Sir. Okay. अब आप लोग सारे मुझे अपना अपना करेक्ट स्कोर बताएंगे। दिस वाज मरियम खदीजा स्कोर। यस खदीजा, योर स्कोर इज इंक्रीज बाय 1।
Yes, sir. Okay, so your score is, I mean, in your MCQs, मैं MCQs पे देख लेता हूँ. 16/20 की बजाय आपके MCQs कितने? Your MCQs are 17/20, right? Yes, Khadija. Oh, sorry, Mariam. He's by 2. नहीं, टोटल कितना हुआ फिर आपका इन MCQs? Be 15 by, okay, 15/20. It's okay. And Ariba, Wait, let me check my paper again. आज तुम I रिस्पॉन्स think it बहुत will स्लो be कर रही हो. 17 out of 20. Yes, 17 out of 20. ठीक है. So you are 17 out of 20. ठीक है. यूं करके आप सब लोगों का स्कोर हो गया परफेक्ट. इज इट क्लियर? और हाँ, सॉरी, जैनब, आपकी कोई करेक्शन हुई? Sir, मेरा 14 हो गया. Like वही 14 ही है. ठीक है, गुड. ओके, आगे चलते हैं. ये वाला काफी हॉरिबल क्वेश्चन था, आई मीन हॉरिबल पेपर था, एंड लेट्स गो थ्रू दैट वन. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है. जी बोलिए. Sir, तो मेरा पेपर out of 48 होगा फिर. क्या होगा? हाँ I'm so confused. Out of हाँ हाँ, 48? तुम्हारा पेपर आउट ऑफ 48 है. Okay, okay. Who is ठीक there? है फिर. आप लोग मुझे जस्ट 1 मिनट दे दो, गेट पे कोई है एंड आई हैव टू चेक, राइट? ये बच्चे मेरे गए थे तो जस्ट अ सेकंड. यस जी, आई एम बैक. सो आपका हो गया आउट ऑफ 48. ठीक है जैनब, जी ठीक है सर. तो तुम्हारी क्या परसेंटेज बनी फिर? Wait sir, let me calculate. जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो, मैं थ्योरी का पार्ट डिस्कस करूंगा, हमारा टाइम बहुत शॉर्ट है. और द क्वेश्चंस व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल, जिसमें आपका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, दैट क्वेश्चन वाज फाइन. आई होप दैट एवरीवन नाउज दिस क्वेश्चन. द main area what was discussionable in this question was basically that you have no need to draw the graph below the axis. ठीक है जैनब, वहां पे आपके ग्राफ में जो मसला था, आपने इसको बिलो द एक्सिस लेकर गई हुई थी ये, so that is not सर required. मगर ठीक है, उसमें वो कह रहा था कि मतलब लाइक डिसेलरेट उसने कर ये रहा तो नहीं बोला हुआ कहीं कि डिसेलरेट कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बोला हुआ कि डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, नहीं बोला हुआ ना. है. हम्म. जब डिसेलरेट कर रहा है तो वेलोसिटी विल बी डिक्रीज फ्रॉम दिस पार्ट टू 0. लेकिन अगर वो डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, देन यू विल से कि यस इट इज कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो ऐसा इस वजह से था. डिसेलरेशन का मतलब आपने सिर्फ वेलोसिटी को कम करना है. ठीक है, ठीक है सर. ओके. ये पार्ट सबका सही था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. यस, ये वाला पार्ट मरियम का पेपर है, अरीबा का पेपर है. अरीबा, determine the height reached by the rocket after 120 seconds. It was quite simple to calculate area under the graph. ठीक है, so 1/2 base आपके पास कितना था? The base was this entire, from this point to this point, 120 seconds was the base. And what was the height of this? Height was 90. ठीक है, तो आप बेस ट्राइंगल का एरिया ऐसे ही कैलकुलेट कर दियो ना. इट वाज 120 टाइम्स 90. तो ये आपके पास मेरे ही कैलकुलेशन के मुताबिक
5400 मीटर या इतना आना चाहिए। इज इट? मरियम, आपने भी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक किया था। यू यूज्ड अ वैल्यू जिसको मुझे याद आ रहा है, आपके इसमें मिस्टेक थी एक छोटी सी। मैं पेपर इसी तरह डिस्कस करता होता हूँ, इसलिए आइंदा आप लोगों ने बिल्कुल। और मरियम ने पेपर बहुत अच्छा सॉल्व किया है विद ऑल रेफरेंसेस ऑफ इक्वेशंस, जो कि मोस्टली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसने सारी इक्वेशंस यूज की हैं और फिर इक्वेशंस को प्रॉपर यूटिलाइज किया है। सो आई वाज एक्चुअली अप्रिशिएटिंग यू। लेकिन यहाँ पे जाके ना तुम्हें जो बेस एरिया ना, ये 900 नहीं लेना था, इट वाज व्हाट 90, सॉरी 120। ठीक है, गलती समझ आ गई? 20 into नहीं 900. 90 नहीं, सॉरी 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 900 इंटू ये वाला गलत था, 120 लेना था 90 की जगह। सही है, Got it. ये 900 था। ओके, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। दिस वाज ऑल करेक्ट। सिर्फ मुझे लग रहा है कि एक बच्चे का इश्यू था इसमें। यस, खदीजा को देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है खदीजा ने भी एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ किया है। दिस वाज करेक्ट खदीजा, गुड। हाँ, यहाँ पे आप लोगों ने सब ने सिर्फ एक छोटा सा मिस्टेक किया, ऑल्दो आई हैव नॉट मीन पेनलाइज्ड यू, कि दिस astronaut weight on the earth is the gravitational force between what earth between astronaut and अर्थ सेंटर, या सेंटर ऑफ अर्थ लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, Okay. रेस्ट ऑल ऑफ यू स्कोर्ड गुड मार्क्स हियर। सो इसमें कोई मुझे ऐसे लग रहा है कि डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ये जैनब, इज इट क्लियर बेटा टू यू आल्सो? Yes, sir. Sir, I calculated my total. हाँ, क्या हुआ है टोटल का? There is 77 है, sadly. 77% है ना? जी जी। बस तुम्हारा भी ऑलमोस्ट तकरीबन सारे बच्चे माशाल्लाह एक ही उसके ऊपर गए हो। 77, 76, 78, 79, इतना ही है सबका। ठीक है, वेल मैं दोबारा कैलकुलेशंस करके सबसे एंड पे कैलकुलेट वो भी करता हूँ। मामा दरवाजा खोलो बेटा। ओके, ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इसमें मैंने आपको ये वन ऑफ द हार्ड क्वेश्चंस मतलब जो मैंने पुट किए थे इसमें, सबसे पहला आपको ये देखना था यू हैव टू ड्रॉ अ पाथ। और सबसे अच्छा पाथ जो पेपर पे ड्रॉ किया था, दैट आई फाउंड इन मरियम्स पेपर। ये बहुत दूर पत्थर फेंका है इसने। ठीक है, गुड। एक्चुअली इसने ना यहाँ से हॉरिजेंटल पत्थर फेंका है। सही है, बात समझ आ रही है? तो ये एग्जैक्ट इसने वहां से डिस्क्राइब किया है। खदीजा ने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, इसने भी थोड़ा सा अपवर्ड फेंक के फिर इसको नीचे लेकर गई है। और अरीबा का भी इसी तरह था। और जैनब के पेपर में भी मैंने देखा था, जैनब ने भी ड्राइंग अच्छी की है बिकॉज शी वाज नॉट हैविंग द प्रिंटेड पेपर, लेकिन उसने यही वाली डायग्राम एज इट इज बनाई है। अपने ऊपर नहीं फेंकना था, ये क्या करना था, दिस वे। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, मैंने किसी के नंबर नहीं काटे बिकॉज फर्स्ट this type of discussion was not made by me in your notes or in the lectures के जो आपका इस तरह अगर हॉरिजेंटली कोई चीज फेंकी जाए ऊपर से तो पहले वो सीधी आगे जाएगी फिर नीचे आएगी। एंड द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट वाज, जिसमें खदीजा ने मिस्टेक की है, देयर वर टू फोर्सेस एक्टिंग ओवर हियर, वन वाज द वेट एंड वन वाज द एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, खदीजा ने नहीं, खदीजा ने की, किसने की? मरियम ने की है। Yeah, I did not mention the arrows, I think. Yeah. हाँ, यस, दैट वन ऑफ द स्टूडेंट वाज हैविंग सम इशू। ओके, अच्छा, तो ये हो गया। उसके बाद कह रहा है ऑन द लाइन ड्रॉ द पॉइंट्स, ये भी हो गया। देन दिस वाज द क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में लेटर द पर्सन ड्रॉप सम स्मॉल एंड अ लार्ज स्टोन वर्टिकली फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ। ठीक है, लार्ज स्टोन फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिफ। अब स्टोन एक ही है, ये बात याद रखनी है, सिर्फ एक का साइज छोटा है, एक का साइज बड़ा है। द कमेंट ऑन द टाइम टेकन फॉर टू स्टोन्स हिट द बॉर्डर। अच्छा, ये बेसिकली दिस क्वेश्चन इज वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एयर में ये सारा काम हो रहा है। तो जो आपका लार्जेस्ट स्टोन है
लार्जर स्टोन के ऊपर वेट ज्यादा एक्ट करेगा, ठीक है, उसका वेट ज्यादा होगा। तो इसको टर्मिनल स्पीड तक लेके जाने के लिए वी विल नीड ह्यूज ड्रैग फोर्स, ठीक है, आर इसके लिए ज्यादा देर बाद इसको मिलेगा। जबकि जो आपका स्मॉलर वेट है, स्मॉलर स्टोन है, उसका वेट थोड़ा है, वो जल्दी एयर रेजिस्टेंस उसके इक्वल हो जाएगी। अरीबा, आर यू गेटिंग इट? सॉरी, आई वाज इन द फ्लो, सो डिड यू गेट इट? When there will be a larger stone, what will happen? In the larger stone, the weight would be more. For example, it is 100 Newton, and you will need the resistance force of 100 Newton to make it balance, or to shift it to the terminal velocity. But here, if the weight is, let's say, 10 Newton, so this 10 Newton will be achieved very quickly. That is why this stone will be moving with terminal speeds or lower speeds than that of this one. So this heavy stone will reach to the ground more quickly, or it will reach to the ground first. It will Hmm? reach to the stone, sorry, to the water first. The ठीक reasoning है? again. Yes, I'm saying that if I say that one of the stone was heavier, one of the stone was, sorry, one of the stone was larger, one of the stone was smaller, but both were stones. Uh, okay, so the densities were almost same. अब वो जो smaller stone है, its weight will be less. So I just consider कि let's say 10 Newton weight है. So 10 Newton resistance force will be achieved more quickly. So now this stone would have a constant velocity. इसको हम लोग कहेंगे कि it is moving with constant speed. So it will have a constant speed in the downward direction. Whereas the stone with which is larger one, तो उसमें आपके पास क्या है? It will have more weights. So let's say it is 100 Newton. ठीक है, जब ये 100 Newton है, तो you can say that 100 Newton would not be achieved quickly. So when it will reach the ground, maybe the force by which there is a resistive force, so that is, let's say, 80 Newton force. So it will not reach to terminal speed. So this will continuously accelerate, where this would move with a constant speed. So the object which accelerates continuously, it reaches quickly on the destination, or it reaches earlier than that of which is having constant speed. Okay, got it, sir. Okay, Yes. um this was the question जिसके लिए मैंने इतना भाग भाग के आप लोगों को यहाँ तक पहुंचाया. Sir, this was such a dumb question. अगर परफेक्ट क्वेश्चन. खदीजा की फिजिक्स. खदीजा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आई वाज रियली अप्रिशिएटिंग यू व्हाइल आई वाज चेकिंग द पेपर. फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न ऑल दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन? सर ग्रेड 8 में टीचर ने पढ़ाया था। कौन से टीचर ने? ग्रेड 8 में मैंने बेसिकली लाइक दूसरा स्कूल था मेरा, तो लाइक उन्होंने उधर फेडरल का सिलेबस और पढ़ाया था, तो उसमें ही उन्होंने थ्री मोशंस पढ़ाए थे। अच्छा अच्छा, प्री नाइन्थ किया था तुमने, है ना, ग्रेड 8 जी। में. गुड, बिकॉज these equations are not included in the syllabus. Examiner appreciate नहीं करता if you use these equations to solve the questions, but it was not wrong. Physics में अगर मैं बात करूं तो, but these equations are used in A levels and federal board का जो 9th grade है उसमें ये equations हैं. So if you can mean if you are able to use them, you can. But there was one other method which is appreciated and which is actually acceptable. वो मैं आपको बता देता हूँ. राइट, किसने किया था? और मैंने किसी के हाँ, या अरीबा ने किया था. यस, अरीबा के क्वेश्चन पे तो मैंने गुड भी दिया हुआ है. अरीबा, आर यू देयर? Yes, sir, I'm right here with a very slow mic, but I'm here. Okay, no problem, no problem. Speed of sound remains same, whatever the mic is slow or not, does not matter. ठीक है, देखो, what did you do? I mean, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ. Is Mariam speaking? Mariam, your voice is very low. Are you asking me something?
Okay. So that question is that ke, when the person is going to drop the stone, okay, he saw mean smoke at a ship which was 800 meter away from him. He saw the smoke, and when the stone hit the water, he heard the sound. So sound was actually produced from the ship, and the time in which stone reaches to the water, the sound reaches to this person. So this first part was how much time will the sound take to reach that guy. So sound kitna time legi reach karte hue? You will use this equation. S is equals to Vt or D is equals to Vt. ठीक है? Got it? Yeah. And you will see that 800 meter away से अगर उसने smoke देखा है, and that smoke is the speed of sound is 320 meter per second, so it means it has taken 2.5 seconds for the sound to reach that guy. So time आपका ये हो गया. Now you will use the equation of, ये अरीबा ने ये वाली equation इसने भी कहीं से मेरा ख्याल है कॉपी पेस्ट किया है. अरीबा, Hmm? usually this equation is in this format: a is equals to v minus u divided by t, and But sir, because at school we learned this one. At least my teacher taught me this one. मुझे पता है v is equals to u plus at. That can be formatted this way, and when the body is falling down, this acceleration is the value, this is the acceleration with value 9.81. So u plus 9.81 times t is 2.5. So initial speed is 0 because the object is dropped down. So I can say that it has no speed at the starting point. So when you place all the values, this is 0. G की value 9.8 है and 2.5 seconds. So the answer is 24.5 meters per second. ये जो तुम यूनिट्स खा जाती हो, नेक्स्ट टाइम मैंने मार्क्स खा जाने बता रहा हूँ. Okay, sir. ठीक है? इज इट क्लियर यू? Yes, एक sir. बच्चे के कुछ यूनिट्स में मैंने नंबर काटे भी हुए मेरा ख्याल है. सो इफ आई मेक जस्टिस इन माय डायनासिटी, देन देयर शुड बी 3 मार्क्स हियर. ठीक है? ठीक है, sir. ओके, दैट वाज द गेम ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था आपके पेपर में. देन दिस वाज अ फाइन क्वेश्चन. हाँ, एक चीज यहाँ पे आप लोगों ने करनी थी. द मैक्सिमम स्पीड, द मैक्सिमम स्पीड इज एक्चुअली द ग्रेडियंट ऑफ दिस पार्ट, ब्लू पार्ट. ठीक है? आप ग्रेडियंट ले लोगे, and you, because that is the distance time graph, so by taking the gradient you will get the speed. So how to take the gradient? What is the values? Sorry, what are the values? I think Khadija has calculated that one. हाँ, 30 minus 15 and ये time है, and distance is 250 minus 70, so 180. So it was 12 meter per second. So I believe that it will be clear to you. अब मरियम ने भी कुछ ऐसा ही किया है. नहीं, एक और क्वेश्चन भी है. यस, 250 डिवाइडेड बाय 30. मरियम, ये जो हायर स्पीड है ना आपकी, यहाँ पे मैंने आपको बोला हुआ है कि यू हैव टू टेक ग्रेडियंट, दैट्स व्हाई यू आर स्कोरिंग 2 आउट ऑफ 3. ग्रेडियंट लेना है, 250 माइनस 70 करना था. इज इट? आर यू गेटिंग इट? Okay, okay, okay. I got it. So I didn't यस, like what I had to. यस, दैट Oh, वाज वन ऑफ द questions which I had to discuss with you people. Then this was, I think, free के marks थे सबके लिए. So you people enjoyed 5 marks out of 5 here in this one. So this is what I have to, I mean, what I had for you in my first assessment. तो बताइए जी, मरियम, your score is same. Khadija score is same. Ariba score is, सब अपना अपना स्कोर बताइए जल्दी से.
For me, it decreased by 2 marks. Like the original score decreased by 2 marks. ओके, ओरिजिनल में से 2 मार्क्स कम हुए। ठीक है, आप अपना सारा काउंट करके जल्दी से मुझे अपना अपना ग्रेड थ्रेशोल्ड बताइए। एवरीवन हरी अप। So like फॉर the अरीबा इट वाज 8 46 बिकॉज 2 मार्क्स वर गॉन। तो 46 में से आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा, राइट? Okay, what is your grade? But I believe that this is 79 point something. So this is almost 80. How do you do the ठीक है? mental math? Yes. 79 point something इतना आएगा, मतलब करीब करीब होएगा, 70 80 के करीब बनता है ये। ठीक है? And Khadija's marks stayed same, है ना? Almost. ये इधर से मेंटल मैथ हुआ था खदीजा के नंबर से, कॉपी पेस्ट। परेशानी नहीं किया करो। यू हैव टू बी स्मार्ट ना, इंटेलिजेंस एंड स्मार्ट वर्क ये दोनों मिलके काम करते हैं। एंड हियर हाउ मच मार्क्स इज टोटल नाउ? used by 2. That's like 44 by 50, I think. 44 44. 44 पे जल्दी से बताओ मुझे कितने परसेंट बनेगा? Wait, let's see. चेक करो जल्दी। It is 75.8. ये मैंने मेंटल मैथ किया, ये 100%। इसमें मुझे मतलब श्योरिटी है कि आई जस्ट डिड इट मेंटली। ठीक है? सो Okay, sir. इज दिस ऑल क्लियर? एंड ज़ैनब, आपका क्या ग्रेड बना टोटल ओवरऑल आउट ऑफ द अटेम्प्टेड वंस? 77. 77%. So almost every student is in the range of, देखो कितना मजे का रिजल्ट है ना। So this is what the, ये मरियम तुम्हारे 77 77 both, कंपटीशन इसको कहते हैं। Everyone is between 80 and 77। 4 तो तुम बच्चे हो और 3% का मार्क है 76। ठीक है? Is this clear to all? Yes, sir. So I really liked that percentage, ये जो तुम लोगों ने सबने compete किया है। And next time I want कि everyone would compete in the domain of, you know, which one, which area? This way. Basically, it depends on the topic. है? तो ये तो आप प्रैंक कर रहे हैं। क्या कह रही हो मरियम? टॉपिक टफ कर रहा हूँ या कंपटीशन टफ कर रहा हूँ? No, I'm saying the results depends on the topic given. नहीं, ऐसा नहीं है। आपके रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं, बट इफ यू विल इंक्रीज द प्रैक्टिस। देखो